What is up, YouTubers poppin? तो सैम ऑल्टमैन ने शुरू कर दिया अपना रेड कोड, क्योंकि जेमिनाई 3 जब से निकला तो इसके शॉर्ट हो गए हैं सिस्टम। तो इसने गूगल में जब से जेमिनाई 3 निकला तब से इसने ओपन एआई में कोड रेड इशू किए मेमो कि सारे काम रोक दिए जाए और सिर्फ चैट जीपीटी पे काम किया जाए। तो न्यूज़ निकली है, इसको देखते हैं क्या सीन है। वैसे ये कोड रेड ये होता है, फुल इमरजेंसी होती है। इसमें कंपनी के सारे डोर शट किए जाते हैं, 24/7 काम करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, और एक प्रॉब्लम आती है उसको सही करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। वैसे जब से जेमिनाई 3 निकला है मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने ओपन एआई की चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन ली थी। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे, पैसे खर्च करके बकवास था। लेकिन अभी मैंने जेमिनी की ली हुई है, काफ़ी मैं खुश हूँ, काफ़ी अच्छा काम करता है वो। लेकिन ओपन एआई बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा था। मैं भी कह रहा था कि ये मॉडल क्या कर रहा है। ऊपर से फिर ये हुआ, मैंने गूगल नोटबुक एलएम चलाई, तो वो जो है ना जेमिनी 3 आने से 1-2 दिन पहले मैंने चलाई, और उसमें जो अपडेट्स आई हुई थी वो फैसिनेटिंग थी। तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तो उसी दिन ही गूगल के स्टॉक्स पे डाल देता, लेकिन पैसे नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं डाल सका। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या सीन है, न्यूज़ कहाँ तक पहुंची है, ओपन मेमो क्या लिखा है उसने, इधर देखते हैं। OpenAI declaring code red as the AI race intensifies, and Google threatens to unseat the industry's early leader. According to a report from the Wall Street Journal, OpenAI अच्छा, इसका एक ये है कि सबसे पहले ओपन एआई ने अपना मॉडल निकाला था चैट जीपीटी, तो उसके बाद गूगल ने निकाला ब्रैड नाम से, लेकिन वो बकवास था बिल्कुल। लेकिन गूगल यार इतने $1 ट्रिलियन की कंपनी है, इसकी वैल्यूएशन 500 बिलियन है, लेकिन वो 2027 में पब्लिश होगी। अभी 2026 में इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, और इसका प्रॉफिट भी कुछ नहीं है, $21 बिलियन प्रॉफिट है। गूगल का प्रॉफिट आपको पता है, अल्फ़ाबेट कंपनी इसको ओन करती है, उसका प्रॉफिट कितना ही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है इसकी वैल्यूएशन गूगल। CEO Sam Altman told employees the company must focus on improving ChatGPT, pushing all other products to the sideline to address the threat. Last month, Google released an updated version of its AI model called Gemini. Some are calling it the most capable AI model yet. So let's bring in Jacob Ward, a technology journalist and host of the Rip Current podcast and author of The Loop, How Technology is Creating a World Without Choices and How to Fight Back. Jacob, always good to see you. So why is OpenAI declaring a code red? Or what are the competitive stakes here? Yeah, well, I mean, you can imagine the OpenAI workers coming back from Thanksgiving thinking they're going to coast right into the holiday. Yeah, and no. all of that being blown up when their boss drops this memo on them. Code red sounds like some sort of national emergency. It is not. It is a business emergency. बिजनेस इमरजेंसी है भाईजान, ये बिजनेस इमरजेंसी है, ठीक है। और इसका ये सीन है, सारी चीजें शट डाउन करो, सिर्फ इस पे काम करो, एक चीज पे। वो क्या चीज है बताता है For this company. What they're worried about, of course, is, as you mentioned, Gemini is on the ascent. We've seen Google's user base grow up to something like 650 million monthly users after it released this new image generator. They are definitely catching up. And we saw people like Salesforce CEO Mark Benioff say, this is the one I'm going to use from now on. It's just मार्क बेनी ने कोई वीआईपी का सा कमेंट किया है, जिसके बाद ये सारी जो है ना सिस्टम ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा खासा मेरे ख्याल में कोई बड़ी पोस्ट पे सीईओ किसी कंपनी का है, वो कह रहा है 2 घंटे मैंने जिमिनी यूज़ किया, मैं गूगल का जिमिनी यूज़ करने के बाद ओपन एआई पे मैं कभी नहीं जाने वाला। तो ये इसने कहा था। just so cool, it's so great. And that clearly has OpenAI panicking because, as you mentioned, they are the early leader. We've been using ChatGPT the way we used to use the verb Google. And so now they clearly don't want to be displaced here. So what is it about Gemini that's Yeah. better than ChatGPT? What can it do that the other company can't? Well, so the industry benchmarks are typically things like, you throw at a big stack of trivia. अच्छा, ये जो है ना बेंचमार्क, जैसे ही कोई मॉडल निकलता है नया एआई का, तो उसको कोई प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, और वो जो है ना एक लिमिट क्रॉस करता है तो वो नया बेंचमार्क बनता है, मतलब नया रिकॉर्ड बनता है। तो उसने ओपन एआई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओपन एआई का चैट जीपीटी अभी मेरे ख्याल में 5.1 आया हुआ है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जेमिनी का ये 3 है। यह समझो एप्पल वर्सेस सैमसंग की रेस है। तो मुझे लग रहा है सैमसंग जो है वो इस टाइम जेमिनी है,
और एप्पल जो है वो ओपन Yeah, or a big stack of medical exam questions. You try and trick it into saying hateful or dangerous things and figure out whether it can steer the conversation back in a more great, a better direction. Yeah. But, all those industry benchmarks are theoretically what Gemini has now surpassed this chatbot on. But we don't care about that. I mean, we don't care about that. We care about, does it write funny jokes? Does it make cool images? And does it save me time? जारी बात है यार, आम बंदा तो जो है ना बेंचमार्क के बारे में केयर नहीं करता, लेकिन ये पढ़ाई के में बहुत मदद की है इसने, जेमिनाई ने मेरी। And ChatGPT clearly is still going to be able to do that. They just seem to feel that they need to adopt a new, or at least a more intense version of their strategy in order to get more of us using it. Google makes billions of dollars a year. OpenAI has yet to turn a profit. If money is the issue for OpenAI, why not focus on something like ad revenue, something we know will make dollars? That's right. I mean, the projections are that OpenAI can't even turn a profit till probably 2030. They're talking about spending more. ओ भाई, उसने बहुत ही ज्यादा बंदों से पैसा ले लिया है और वो कह रहा है कि प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता 2030 तक। बहुत बड़ी वैल्यूएशन रखी है यार वैसे अगर देखा जाए तो। मतलब उसका एक कॉन्ट्रैक्ट स्टारगेट चल रहा है, ओरेकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, एनवीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और बंदा जो है ना $20 बिलियन कमा रहा है रेवेन्यू। बाकी जो है ना वो सारा लूप होल्स सेट करने में और सारा टेक्नोलॉजी डेवलप करने में जा रहा है। More than $1 trillion on infrastructure. So how they're going to get there, it's not really clear. But you're right? Why wouldn't you just go for advertising? Why wouldn't you do what Google has done, which makes huge money that way? Well, you'll remember like in the early days of Facebook, which nowadays makes all its money off advertising, Mark Zuckerberg was very reluctant to do advertising. He didn't want to mess with the product. He wanted to make the product irresistible first before he began bothering people with advertising. What you hear in both the Code Red memo language that the Wall Street Journal obtained and in all of the public pronouncements is that what they really want is personalization and emotional attachment. They want ChatGPT to be a thing that you just can't help but use on a psychological and emotional level. It feels to me like that is what they're trying to do. तो कह रहा कोई भी मसला हो डायरेक्ट ही चैट जीपीटी में जाए, अगर पीछे मॉडल सोचे ना, इस वजह से कह रहा पहले रिलाई करा दो फिर उसके बाद ऐड रन करो, इस तरह का फेसबुक ने किया था। For all of us is make us so hooked on this product that we can't help but look at the ads when and if they introduce those. So he seems to feel, Sam Altman seems to feel that he needs to go hard at that before he distracts anybody from anything else. Make it as compelling as possible, make it irresistible. And a lot of these companies seem to be racing ahead when it comes to AI, but not Apple. It's interesting. Right. And ये बात जो कर दिया ना इसने, सैमसंग ले आया एआई, ठीक है, लेकिन एप्पल ओपन एआई को इस्तेमाल करता है, ओपन सोर्स को इस्तेमाल कर रहा है। And there's a lot of speculation about why that is, but what do you think the strategy is here? Well, with Apple, I mean, you really cannot, as a hardware company, as a hardware company that if you make a mistake and then ship everything with a mistake in it, that's a real problem. In software, that's not the problem. Software, you can ship tons and tons and tons of a broken thing and fix it over time, no problem. Apple is in a very careful business as a handset maker, and I think that they probably just don't want to mess with their brand reputation. So while, all of the common wisdom has been saying, oh, they're struggling to keep up and so forth, I don't know, they just feel to me like they're just doing what they do really well. They make gobs of money. They're not hurting for money. No, they're not. ये है भाई, उसने मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले कोई पॉकेट्स निकाले थे आईफोन रखने के लिए, सब ने मजाक उड़ाया एप्पल का, लेकिन फिर भी बिक गई वो सारी। एप्पल प्रॉफिटेबल हो रहा है क्योंकि एप्पल एक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड बना दी है, रादर के उसको डेली यूज़ के लिए हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसे तो अमीर बंदा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा दरवाज़ा बंद हुआ है, थोड़ी आवाज़ आई होगी आपको, लेकिन ये है कि एप्पल एक लग्जरी ब्रांड बन चुका है, मतलब $1000 से नीचे का फ़ोन नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड में उन्होंने हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है फ़ोन को। तो लेकिन ये है कि एप्पल की साइकोलॉजी, मार्केटिंग साइकोलॉजी डिफरेंट है बाकी ब्रांड से। And if they partner up maybe with somebody like a Google, right, to get this out there in the future, they're going to be in a position to put it into all of our pockets instantaneously. So I just अच्छा, गूगल और अगर देखा जाए गूगल और इसकी अच्छी मोनोपोली चली है, गूगल और एप्पल की, क्योंकि गूगल जो है वो प्राइम सर्च बेस है एप्पल का और वो $20 बिलियन पे करता है इसको एप्पल को कि प्राइम रहने के लिए, कि जो भी सर्च हो वो गूगल के थ्रू हो। अगर ये गूगल का मॉडल अच्छा हो गया, पहले तो वो ओपन एआई को सपोर्ट करता था गूगल उसके मोबाइल पे, एप्पल के मोबाइल पे, क्योंकि फ़ोन मैंने एप्पल के ज़्यादा नहीं चलाया, आईफोन ज़्यादा नहीं चलाया,
तो मुझे तो सम इसका ही पता है, मैं सैमसंग चला रहा हूँ, एंड्रॉयड मैंने ज़्यादातर चलाया है। तो देखते हैं क्या सीन होता है। अगर जेमिनी अच्छा मॉडल निकाल लिया उसने तो ज़ाहिर बात है मोनोपोली करके वो सिस्टम आगे ले जाएगा। बाकी इंशाल्लाह कोई और काम और वीडियो आती है तो उधर देखते हैं, नई कंट्रोवर्सी देखेंगे, नई वीडियो देखेंगे।